Hi friends, welcome to our YouTube channel Civil with Sudhir. So today in this video we are discussing about that is a building material and construction subject. Next topic is foundation and types of foundation. So this is a class 16th. So please go before going to start our video. I am going to thank you all of you for your support. Please like, comment and share our videos as well as subscribe our channel and click on the bell icon and click and select the all notification. So you will get all the notification about our latest videos. And please don't forget to join our Telegram channel where we provide all the current affairs as well as the static GK notes. Right? So let's begin, friends. So first of all, understand what are the some basic components, right? So what are some basic components? 1 minute, I will take the pen. So basic components याद नोड़ी. So substructure and superstructure दो ही है, ठीक है. So basic जो है substructure and superstructure. For example, this is ground level, right? If you are constructing any structure just above this above the ground level, right, that we call it as superstructure. This is ground level, right? So this is above the ground level construction, and consider this is an below the ground level. So this is ground level. So below the ground level we call it as substructure, and above the ground level we call it as superstructure. So this is some basic points we should know before going to start this video, right? Sorry. Next is object of foundation. So what is the first of all, just understand what is foundation. Foundation, it is an assembly or a structure to support the above structures. Either it may be column, beam or structure of a building, right? That is the definition of the foundation. Now the object of foundation. So what is the object? Why we require the foundation in our buildings? First, mainly very important point, to distribute the total load coming on the structure on larger area, right? Larger area means, for example, this is your plot area, right? So you have some weak soil at this spot or at this place, but you have a good strength in all these places. So in order to increase the strength of this soil also, what the foundation will do, it will distribute the whole load coming from the structure, will distribute throughout this area, right? So that is the first point. Second one, foundation will help to bring down the load intensity at its base below the safe bearing capacity of the soil. So first of all, understand what is SBC, safe bearing capacity. Safe bearing capacity is nothing but how much the soil will take the load. We can calculate in meter square how much the soil withstand the load, right? That is the SBC. So foundation will help this load intensity should be minimum or within the SBC. For example, किसी एक सॉइल का अगर 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर इसका SBC है, तो आपका जो भी लोड है इससे कम रहना चाहिए. द लोड शुड बी लेस देन द 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो समझ में आया ना, 2 पॉइंट्स, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಬೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಟು ಗಿವ್ ಎನಫ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ದೋಸ್ ಆರ್ ವಿಂಡ್, rain and earthquake, to protect from the above building, above the ground level building. So the wind, rain as well as the earthquake, so the foundation will be a major part in the building to withstand against these forces. Next one, prepare a level and hard surface for concreting and masonry work. So it will foundation क्या करता है, राइट? ये ऐसा बिहेव करता है, वहाँ पे कंक्रीटिंग और मेसनरी वर्क करने के लिए ये एक लेवल ग्राउंड प्रोवाइड करता है हमको. तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट, टू डिस्ट्रीब्यूट द नॉन यूनिफॉर्म लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर इवनली टू द सब सॉइल. सब सॉइल इज नथिंग बट, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, राइट? जस्ट बिलो द ग्राउंड लेवल वी कॉल इट एज सब सॉइल. अबो, राइट? दिस इज सब सॉइल below ground level. So what the foundation will do,
it will withstand a uniform load to the uniform load of the superstructure evenly to the subsoil, means it will distribute to the larger area. Next one, to prevent or minimize cracks due to movement of moisture in case of weak or poor soil. If in any case, अगर कुछ केसेस में अगर वहाँ पे क्रैक होने का चांसेस है मॉइस्चर की वजह से, मॉइस्चर ಇಂದ ನೀರು ತೇವಾಂಶ ಬರೋ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೌಂಡೇಶನ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? Objective of the foundation. Next is type of foundation. There are two types: shallow foundation, deep foundation. So in shallow foundation, depth less than the width of the footing. For example, this is your plan, we are seeing in the plan, right? This is length as well as this is breadth, right? So depth, right, when we draw the cross section, right, depth of the foundation, depth is less than the width of the foundation, right? This is the depth. When the soils are sufficient to strong and stiff to support the imposed load, means the hard rock is available nearby the ground level ge nearby idre, so ಏನಂದ್ರೆ shallow foundation use ಮಾಡ್ತಾರೆ. So not suitable for weak or compressible soil, so ಅದಕ್ಕೆ shallow foundation use ಮಾಡಲ್ಲ. Okay, so deep foundation, depth of foundation should be less than 3 meter or equal to 3 meter. This is important. So it should be less than or equal to 3 meter. 3 meter equal to 3 meter. Right? Next one. So deep foundation. Deep foundation है. So deep foundation में क्या है? When the soil is weak, अगर for example ये एक point है, ये ground level है, यहाँ पे थोड़ा क्या है आपका weak soil है, फिर से यहाँ पे भी थोड़ा मीडियम स्ट्रेंथ है, यहाँ पे बहुत ही वीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका हार्ड स्ट्रेंथ है, तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा. यू हैव टू ड्रिल और यू हैव टू डिग अप टू दिस पॉइंट एंड यू हैव टू मेक द फाउंडेशन. सो इन दिस टाइप ऑफ कंडीशन वी हैव टू यूज द डीप फाउंडेशन, राइट? व्हेन द सॉइल इज वीक, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज मोर देन 3 meter. Greater depth of foundation required to get hard rock or soil below the ground level. So hard rock is required, and they will go up to the more than 3 meter, means you require the hard rock to place the foundation, that is the deep foundation. Transfer the load to a deep depth, right? More than 3 meter or 10 meter sometimes. समझ में आया ना? Deep foundation ತಿಳಿದಲ್ಲ? Next. So next is a type of shallow foundation. So we have some types, that is spread foundation, combined foundation, strap footing or foundation, mat foundation. So these types we'll discuss now in detail with the sketches. First one, isolated footing. To understand better about isolated footing, right, I have just given a 3 different sketches. You can see 3 different sketches with different foundation conditions, right? different conditions है. देखिए, तो ये है हमारा प्लान. ये जो भी आप देख रहे हैं ये प्लान है, ये सेक्शनल एलिवेशन है. दिस इज कॉल्ड सेक्शनल एलिवेशन. दिस इज सेक्शनल एलिवेशन एंड दिस इज प्लान. सो व्हेन वी यूज ओनली ए सिंगल कॉलम, राइट, ए सिंगल फुटिंग, दिस इज फुटिंग एंड दिस इज कॉलम, right? So this type of foundation we call it as isolated footing, right? One second, I will show you one more sketch. Yes, yeah, now you can understand easily now, right? So this one, so this is the, consider this is length and breadth. Just I am marking with the red pen, you can easily understand. So this is what? Length. So this is what? Breadth, and this is the depth of the foundation, right? So this is the depth of the foundation, this one. Now you can see there is they have placed the what, this is what you are seeing, this is a mat, this is mat, this is mat, and just you can see the plus mark here, this is called orientation of the column. They have cemented, okay, just you can see now, right, this one,
this mark we call it as, this is plus mark, so they will make orientation of the column. So after orienting the column, they have placed after placing this mat or mesh on this column, right? And you can see there are 4 bars here and 4 bars there, right? So totally 8 bars with the stirrups. Stirrups is 2-legged. You can see 2-legged stirrups. This also very important. Just remember, ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇರೆನೂ ಓದ್ಕೋಬಹುದು. ಸ್ಟೀಲ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ओके, सो ಇದು आइसोलेटेड फाउंडेशन. सो ये है, ये क्या है, आइसोलेटेड फाउंडेशन है. यहाँ से मैट ऐसा प्रोवाइड करे और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये है क्या, कवरिंग. सो ये है कवरिंग. ठीक है, तो अब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फुटिंग का कितना रहना चाहिए, कवर, क्लियर कवर कितना रहना चाहिए. आप सब लोग कमेंट कीजिए, जिनको भी मालूम है सब लोग कमेंट कीजिए प्लीज. ठीक है, तो ये जो सपोर्ट है इसको स्ट्रेट रखने के लिए, इसको स्ट्रेट रखने के लिए, समझ में आया ना. आइसोलेटेड फुटिंग विथ कॉलम रेनफोर्समेंट. देखिए अब यहाँ पे क्या है, उसमें और इसमें डिफरेंस ज्यादा नहीं है, वो प्रैक्टिकली आपको मैंने दिखाया है. तो यहाँ पे कुछ इसमें भी कुछ डिफरेंट मॉडल्स या हम कह सकते हैं टाइप्स है आइसोलेटेड में. सो डिपेंड्स ऑन द कंडीशन इसको यूज करते हैं आइसोलेटेड फुटिंग. तो आइसोलेटेड फुटिंग जब हम प्लान और एक सिंगल कॉलम विथ ओनली, इसको पैड फाउंडेशन भी बोलते हैं. देखिए इसका और एक नाम है पैड फाउंडेशन. पैड फाउंडेशन, ठीक है, ये पैड के जैसा नीचे और ये ऊपर कॉलम. ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंक्रीट बेस. ये कॉलम, दिस इज कॉलम, ये भी कॉलम, ये भी कॉलम, राइट. तो यहाँ पे फर्स्ट ये सिंगल फुटिंग है, इसको बोलते हैं सिंगल फुटिंग. एक फुटिंग है, उसके ऊपर कॉलम है. तो ये मोस्टली ऑल केसेस में यही रहता है. ठीक है, ऑल केसेस, इन ऑल द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी कैन से. सो दिस इज द केस दे विल यूज. एंड दिस इज द स्टेप्ड फुटिंग. सो व्हेन यू हैव लोड more load on your footing, then to distribute the load evenly, they will use the stepped footing. They will use stepped footing. You can see the plan. This is the plan and this is the sectional elevation. So first footing, second footing, third footing, you can take like this, or we can say first step, second step and third step. After the third step, this is the column they can construct. Okay, and the third one is sloped footing. You can see the slope. So I will draw here now, just you can check. Okay, this is the foundation. After that it will look like, sorry, ड्रॉ कर नहीं पा रहा हूँ, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ. 1 मिनट. ओके, ये पेन से बराबर नहीं आ रहा है. ओके, ऐसा आता है ये. ठीक है, ऐसा. ओके, सो दिस इज the sloped footing. Again this for also to uniformly distribute the load, right. So these are the 3 different isolated footings. So this one also we can say that is an footing, and this is a wall. You can use the masonry also. So these are the concrete column as well as isolated footing. This is what the masonry footing, masonry isolated footing. Simple footing, this we call it as simple footing. So this is plan and this is again sectional elevation. You can see there is a step foundation also. This is the step foundation but using the material stones. Okay, next, just we have already studied this one. ये already हो गया. तो आपको कुछ भी देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं. तो यहाँ पे बेंट भी है, देखिए ऐसा है, ये जो बेंट ऐसा रहता है इसका. ठीक है, और ये इसको दोनों तरफ क्या है, मेन बार्स रहते हैं. ओके, समझ में आया कुछ तो. ठीक है, चलो नेक्स्ट, कंबाइंड फुटिंग और फाउंडेशन. तो कंबाइंड फुटिंग हम कब यूज करते हैं और आइसोलेटेड फुटिंग. आइसोलेटेड तो हो गया, अभी आपको मालूम हुआ. हम कॉमन पर्पस या जनरली उसको क्या है, हम आइसोलेटेड फुटिंग यूज करते हैं. कंबाइंड फुटिंग हम यूज करते हैं तब जब 2 और मोर कॉलम्स, 2 कॉलम्स नियर बाय आया तो हम उसको यूज करते हैं. स्ट्रेट लाइन और कैरिड ऑन ए सिंगल स्प्रेड फुटिंग, इट इज कॉल्ड एज कंबाइंड फुटिंग. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कॉलम है और फुटिंग है और यहाँ पे भी फुटिंग है. दे आर जस्ट नियर टू ईच अदर. सो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग सेपरेट फुटिंग्स फॉर बोथ द कॉलम्स, they will provide
a common footing. They will provide a common footing for both the columns. So that type of foundation or footing we call it as combined footing. So when the limited space, when you have limited space and it increases the overall strength of the column as well as the structure, right? Just remember these 3 points, it is very important. Now you can see the rectangular type of footing, rectangular combined footing and trapezoidal combined footing. The only difference is the shape of the footing, here you can see the rectangular type, right? This is the rectangular type, this is plan, and these are the 2 columns. When we see from the top, you can look like this, like this, right? This is footing and these are the columns. When these are very near to each other, we will provide the common type of footing, right? Same for this also, but this one is applied where the space is very less, if you have any boundary. Okay, yes, you can see some practical pictures also I have uploaded to understand better. So this is the length, you can see this is the depth, and this is also the breadth, and this is depth or thickness, and these are the 2 columns. So these are very near to each other, that's why they have provided. You can see here also, right? So this is about the combined footing construction. Okay, now strap footing or foundation. Let me first you watch you can first seeing the sketch you can understand better. So when you have any property line on your column or footing, अगर यहाँ पे property line आया, okay, उस boundary पे अगर आपका क्या है footing actually ऐसा आना था, okay, for example आपका footing ऐसा आना था, but आपका boundary line इतना ही है, your boundary line, ನಿಮ್ದು boundary line ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ತುಂಬ ಇದು ಸ್ಕೆಚಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, right? So for example your footing is this much width. Due to the property line there is restricted in the area, they have reduced the size of the footing. Then you have to provide a beam connecting the nearby column, right? You can see here. So this is a property line and this is column. So this is column and this is another column, column 1 and column 2, right? So when you have provided this column just nearby this property line, then you have to construct an beam. That beam we call it as strap beam, right? And it will connect from this footing to this footing, right? This will act like a strap beam. So that type of beam or foundation we call it as strap foundation, right? Just pause the video and you can take the sketch also. Now we'll see some points. It is a type of combined footing, consists of 2 or more columns, right? Just you have seen 2 or more columns, and footing connected by concrete beam, right? That beam we call it as strap beam. It will help to distribute the weight of heavily or eccentrically loaded. So what do you mean by this eccentrically loaded column, right? Just you have seen this situation same. Just I will draw here. 1 minute. I will draw here. You will understand easily. For example, this is your property line. You have provided the footing like this. So this is footing. This is footing, and your column will come like this, for example. But the actual footing should be come like this. But this is your property line. So we can't construct this one now. We have to avoid this one. So in that case, if you provided the column like this, so that type of column we call it as eccentrically loaded column. So you have to design the beam from here to connect to the nearby column. That type of foundation we call it as strap footing or foundation. Okay. Next one, space is less or boundary of a property line. Space is less or a boundary of a property line. Space is less, boundary of a property line, right? So next is
next one we will see. 1 minute. Yeah, right, we have done this one. Now you can see another sketch for your better understanding. So yes, this is called eccentrically loaded column, because the column is placed exactly at the corner of the footing, right? But this is an, we can say this is an isolated footing. You can see the difference between this. This is isolated footing, and this is eccentrically loaded column as well as footing. Eccentrically loaded column footings. Okay. Next is mat foundation. So what is mat foundation? When necessary, when the soil is weaker and more compressible, large area is needed from spread footing, mat foundation is more economic. So when you have, for example, yes, you can see now the sketch. By seeing the sketch you can understand easily. So this is the area of your plot. Consider this is the area of your plot, but the soil presence in this site is weak. Okay, so now we want to construct. So in that condition, what they will do, they will just provide first one slab at the bottom. They will provide the slab, or we can say that is a complete common footing for all the columns. Common footing for all the columns, and they will provide the columns. Common footing for all the columns, and they will provide the columns like this. So this type of foundation we call it as what? Mat foundation. Mat foundation. So where we'll use large heavily reinforced concrete slab placed under the entire building to support loads from several points. So it is used where heavy loads on weak soil. If the soil is weak, if you want to construct a heavy structure, then you have to use the mat foundation, right? We have some points here. So advantage, it will spread the load in a larger area, and it will increase the bearing pressure. It will increase the bearing pressure, provide more structural rigidity, reduce settlement, right? Settlement will be reduced. Heavier, more resistance to uplift. It will not overturn. Distribute load more evenly. आयता अर्थ आयतला. सो ಇದು मैट फाउंडेशन. ये मैट फाउंडेशन है, आपको आराम से अंडरस्टैंड हो जाएगा, बिकॉज आप स्केच देखने के बाद आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा. ओके. हाँ, ये और एक है, देखिए स्लैब बीम टाइप राफ्ट फाउंडेशन. इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है. तो सेम वही है, एक सिस्टमेटिक स्केच है. ये जो आपको दिख रहा है ये स्लैब है. उसके बाद ये जो बीम्स है इसको प्लिंथ बीम्स भी बोलते हैं, या टाई बीम्स भी हम बोलते हैं. उसके बाद ये क्या है? कॉलम. दीज आर द कॉलम्स, these are the beams, right? समझ में है ना? Next is deep foundation. So deep foundation we have two types. One is pile foundation, another one is PR foundation. So first we will discuss pile foundation. So first understand what is pile foundation. Basically a long cylinder of strong material such as concrete, either pushed into the ground to act as a steady support for the structure to build on top of it. To understand this, first of all we will see the sketches. Yes, you can see. For example, take one example or case or condition. There is the soil will present on, for example, this is your ground level. This is ground level. Just near the ground level there is low density or low soil strength, and just below this one some medium strength or medium density. Just below this one there is high density. So in that condition we have to use the pile foundation. So what they will do, they will take a cylinder like structure, right? This is a cylinder like structure. Just they will insert using the pile cap, and just they what they will do, they will like this, they will just put here, and just they will put a load on here, and it will inserted by the load on this one, right? And pile cap and the load of this structure. So they will construct the above. Again they will construct the structure just above this one. 1 minute. They will construct the structure just above here, right? So this type of foundation we call it as pile foundation. So when will you use this type of foundation? Where the soil strength is very weak. Okay, we will discuss now this one. Pile is basically a long cylinder of strong material such as concrete, pushed into the ground to act as a steady support for the structure built on the top of it. Just I have explained you about this.
next point, pile foundation carry heavy loads than any other type of foundation. It will carry heavy loads for the metros also, right? For the metro, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಇರಲಿ, ದಿಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೆಟ್ರೋ, ಯಾವುದೇ ಮೆಟ್ರೋ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪೈಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪು ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಯಾವುದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂದರೆ pile foundation. They will use them for metro work in India. They will use the pile foundation because there is a heavy load on the above structure, right? So this type of load will transfer through the friction pile or bearing pile. So इसको अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, friction pile बोले तो क्या, bearing pile बोले तो क्या. Pile foundations are established at greater depths. These are established at greater depth. Now conditions of using pile. So what are the different conditions of using pile? If loading is uneven and no firm strata, right? Loading uneven नहीं है और firm strata भी नहीं है, एक level ground नहीं है, तो उस conditions में हम pile foundation करते हैं. और loading भी uneven रहता है, तब उस condition में भी हम pile use करते हैं. Pumping of subsoil water would be too costly. For example, अगर आपका यहाँ पे फाउंडेशन आपने अर्थवर्क किया तो यहाँ पे क्या है, वीक सॉइल है, राइट? बट वीक सॉइल है तो उसको पंप करने के लिए कॉस्ट ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए इन दैट कंडीशन यू हैव टू यूज द पाइल फाउंडेशन. सो कंडीशंस ऑफ यूजिंग पाइल, सॉरी, ओके, ये यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स है कंडीशन, देखिए. सो व्हेन देयर इज अ वीक सॉइल एट द सरफेस, इफ लोडिंग इज अनइवन एंड फर्म स्ट्रटा, जस्ट मैंने आपको बताया, पंपिंग ये भी हो गया. हाँ, और एक पॉइंट, व्हेन बिल्डिंग हैज वेरी हेवी कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स सच एज हाई राइज स्ट्रक्चर्स और वाटर टैंक ब्रिज. सो वाटर टैंक ब्रिज के लिए भी हम क्या है, पाइल फाउंडेशन यूज करते हैं. यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है आपको, ठीक है? तो ये हो गया पूरा क्या, पाइल के बारे में. तो ये स्केच आपको जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. अब कुछ टाइप्स है पाइल के, एंड बेयरिंग पाइल्स, फ्रिक्शन पाइल्स, कंबाइंड एंड बेयरिंग फ्रिक्शन पाइल्स, एंकर पाइल्स, टेंशन और अपलिफ्ट पाइल्स, शीट पाइल और बैटर पाइल्स. ये कुछ है, कुछ टाइप्स है, आपको जस्ट रिमेंबर कर लो या लिख लो आप. सो नेक्स्ट है पियर फाउंडेशन. इन पियर फाउंडेशन, राइट, सो इट इज अ टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन आल्सो विच कंसिस्ट ऑफ ए सिलिंड्रिकल कॉलम ऑफ लार्ज सुपर इम्पोज लोड्स टू फॉर्म स्ट्राटा बिलो, राइट? सो सेम ये क्या है, पाइल फाउंडेशन के जैसा ही रहता है, बट ये क्या, इसका डेप्थ जो है कम रहता है पाइल फाउंडेशन से कंपेयर किया तो. सो ट्रांसफर लोड थ्रो बेयरिंग ओनली, ये बेयरिंग से ट्रांसफर करता है, बाकी कुछ और मेथड से हम नहीं कर सकते. शैलो और डेप्थ, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीज आर शैलो और डेप्थ. तो पाइल फाउंडेशन हम डीप तक कर सकते हैं, कितना मीटर उतना चाहे हम कर सकते हैं, बट पियर में वैसा नहीं है. पियर क्या है, एक स्पेसिफिक डेप्थ में ही कर सकते हैं, बट ये क्या है, शैलो फाउंडेशन नहीं है, बट ये डीप फाउंडेशन ही है, बट ये डेप्थ इसका पाइल से कम रहता है. सो नेक्स्ट है कंडीशन, कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, किस कंडीशन में. अगर एक टॉप लेयर डिकम्पोज है रॉक, ओवरलेइंग ए स्ट्राटा ऑफ साउंड रॉक, इन सच केसेस, फॉर एग्जांपल, एक मिनट, यहाँ पे एक ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे इतना सारा पूरा हार्ड रॉक है, ठीक है? फिर से यहाँ पे थोड़ा मीडियम है, यहाँ पे फिर से सॉफ्ट है, और यहाँ पे फिर से हार्ड रॉक है. तो आपको यहाँ पे क्या है, पाइल फाउंडेशन करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हार्ड रॉक रहता है ना. तो इसके लिए हम यहाँ पे पाइल फाउंडेशन नहीं करते, यहाँ पे पियर फाउंडेशन करते हैं. समझ में आया ना? तो उस पॉइंट पे हम पियर फाउंडेशन को यूज करते हैं, ठीक है? तो पियर फाउंडेशन के भी कुछ टाइप्स है, उसको भी देख लीजिए. मेसनरी पियर है और ड्रिल कैचन, उसमें भी 3 टाइप्स है, कंक्रीट इन स्टील शेल पियर, ड्रिल्ड कंक्रीट पियर, कंक्रीट एंड स्टील शेल पियर. अगर हुआ तो पाइल्स के बारे में एक सेपरेट फ्रिक्शन पाइल, वो जो भी टाइप्स है उसका विद स्केचेस मैं आपको अगले या हुआ तो मैं आपको अगला वीडियो कर दूंगा. तो थैंक यू फ्रेंड्स to watching our videos and motivating me in the very huge manner. Thanks for your support. Please like, comment and share, and don't भूल मत जाइए सब्सक्राइब करना, अच्छे से याद रख लीजिए. धन्यवाद.